Yes. So in this video, we are going to study about the factors influencing the distribution of population. This is the second chapter of the geography book, the world geography. And in the last video, we studied about the density of the population throughout the world. And in this, so in the last video, in the last topic, we discussed that in the some part of the world are highly populated and some are very sparsely populated. We saw that in this table, we saw that the density of Asia continent is 146, which is the more than 3 times of any other continent. And on the same place and on the same time, we see that there are some other continents where the density of the population is 20 or even 5 persons per square kilometers. Now, what are the factors which affect or which influence the high density or at a particular place and the low density at the particular place for the unevenly distribution of the population? So let's see that we have what are the factors which affect the distribution of population over the different places or the different first factor that we are going to study about is the geographical factors. Now, what are the geographical factors? We know that geography is the earth, or it is the related to the earth. So, the factors which are related to the land, earth, and the environment. So, what some of the we will be studying about these factors, which are the factors related to the nature, our mother nature. The first one is the out of them. First one is the availability of water. Availability of water. We know that water is the most important factor for life. Water is used. Water is used for the every activity of the human being. We use water for drinking, for bathing, for washing, for factories, for agriculture, for cooling, and for many other things. For animals, for the plants. So water is needed in every aspect of life, and without water, the life is. If the availability of water is not sufficient at the particular place, the life becomes quite difficult. So, wherever the water is available in the good quantity and good quality, the one man not only quantity but the quality of the water is also important, because the most of the water available on the earth is saline water. The pure water, the amount of the pure water is very less. So पानी अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो और अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो, तो इस ऐसी जगह पे लोग रहना पसंद करते हैं. People prefer to live on the places where the water is available in the proper amount, in the proper quality. It is because of this, and we see some examples of this also. If we take the example of India, almost all the earlier civilizations are located on the river banks or in the river valleys. And if we see the present scenario, the river plains or the river banks, most of the big cities are located on the river banks, and the areas around the rivers or the areas which are made by the river plains are thickly dense, are thickly populated. That is the reason. So availability of water affects the distribution of the population. If the water is available in the proper amount, the
people will start living there, and the place will become highly populated. Then the next factor is the landforms. We know that landforms means just like the rivers, plateau, mountains, desert, all these things come in the river. So people prefer to live on the flat plains and gentle slopes. The people, now people generally, people don't prefer to live in the rough terrains or where the landforms are rough, just like the uh, high mountains, the valleys, gorges, and the desert. In such places, people do not prefer to live because living in those places becomes difficult. The means that those places are not comfortable. So this is because such areas are favorable for the production of crops. And the other reason behind leaving the people in the plain areas is the production, because such type of areas are favorable for the development of the agriculture, for building the roads and for building the industries and even the house. If the areas are, if the terrain or if the landforms are rough, अगर rough landforms होंगे, हाई माउंटेन्स होंगे, डेजर्ट्स होंगे, वैलीज होंगे, तो ऐसी जगह पे एक तो खेती करना मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे आसानी से खेती नहीं हो सकती है. सेकंड, रोड्स में ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि रोड्स नहीं बनाए जा सकते हैं. सेम इंडस्ट्रीज सेटअप करना भी वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए लोग ज्यादातर लोग तो आप प्लेन एरिया के अंदर रहना पसंद करते हैं. I know that in the mountains and hilly areas, development of the agriculture and the industrial is quite difficult. So these areas tend to be less populated. That's why the areas of hilly areas and the mountainous areas are less populated, thinly populated. Example is there that the Ganga plains are among the most densely populated areas of the world, while the mountain zones in the Himalayas are sparsely populated. दोनों एग्जाम्पल इंडिया के अंदर ही है. जो गंगा प्लेन से वो वर्ल्ड पे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जगहों में से एक है, वही जो हिमालयन माउंटेन से वह वहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो कम है. दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. Third geographical factors is the climate. Same, if the climate is extreme or if the climate is very hot or cold, the people would not like to live there because these climatic conditions are not comfortable for human habitation. क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है या कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो ऐसी जगह लोगों को रहने के लिए फेवरेबल नहीं होती है, वो अनकंफर्टेबल होती है. That's why such type of areas are lessly populated, and people like to live or prefer to live in the where the seasonal variation is very less. जहाँ पे ज्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होता. सीजनल वेरिएशन मतलब जैसे गर्मी के अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी. तो जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जिस जगह पे मॉडरेट क्लाइमेट का ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, वहां पे लोग रहना ज्यादा. People where there is the harsh means very heavy rainfall and the harsh climate, जिस जगह का जिस लोकेशंस का बहुत ज्यादा बारिश होती है या बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट होता है, ऐसी जगह लेस पॉपुलेटेड होती है. वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है लो पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं. And some examples are the Mediterranean regions were inhabited from early period in history because their pleasant climate. तो Mediterranean जो कि moderate climate वाले एरिया थे, वहाँ पे अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री से लोग रहना शुरू कर जाते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट प्लीजेंट है. Now another geographical factor means we are studying about the
factors which influence the distribution of population, and the first factor was the geographical factors. So, in the geographical factors, the fourth factor is the soil. If the soil of the particular area is not fertile, the agricultural in this type of soil would be very easy and very productive. Agar, that's why the people would like to live in such a place where the soil is very fertile. जहाँ पे अच्छी soil होएगी, वहाँ पे अच्छी agriculture होएगा. अगर agriculture होगा तो इसलिए वहाँ पे लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं. इसीलिए जहाँ पे फर्टाइल सोइल, लोमी फर्टाइल सोइल होती है, वहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, और जहाँ पे सोइल फर्टाइल नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैंडी सोइल इन द डेजर्ट और अदर, तो वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं. इसके बाद पे जो नेक्स्ट फैक्टर है पॉपुलेशन को, तो किसी एरिया की पॉपुलेशन को कम या ज्यादा होने के लिए जो इफेक्ट करने वाला है वो है इकोनॉमिकल फैक्टर, मतलब पैसों से रिलेटेड. अगर area the economic growth of the particular place depends on the availability of the resources into the nature. अगर नेचर के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. अगर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज एरियाज. सो द फर्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर इज द मिनरल्स. As I told that if the areas where the minerals are available in abundant in the nature, the means that the mining industry developed there, and the people started moving towards the area. उस जगह की तरफ लोग अपने आप ही अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, और वहाँ पे धीरे धीरे जो लेबर की जब माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो वहाँ पे लेबर्स की स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर वर्कर्स की जरूरत पड़ती है. वर्कर्स की जरूरत पड़ती है तो लोग धीरे धीरे वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं. इसका एक एग्जांपल है काटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका. इज द वन सच गुड एग्जांपल. अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो एक जो छोटा नागपुर है ओडिशा में, द terrain is not suitable. Even after that also the big cities like Jamshedpur and the many other cities have been developed here because of the mining and because of the minerals available in that area. The other economic factor is the urbanization. We know that in the urban areas or in the cities there is a better employment opportunity. सिटीज के अंदर काम मिलने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज होती है, मेडिकल फैसिलिटीज होती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बेटर होता है. इसी वजह से जिन सिटीज की में सिविक एमिनिटीज और अट्रैक्शंस ऑफ सिटी लाइफ अट्रैक्ट द पीपल टू दी सिटीज. इसी वजह से इन फैसिलिटीज की वजह से लोग सिटीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा एजुकेशन मिलता है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होती है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा होता है. तो इन सभी फैसिलिटीज की वजह से लोग अपनी उनकी तरफ सिटीज की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं. दैट्स व्हाई इट लीड एंड बिकॉज ऑफ दिस it leads the migrations from rural to cities, and the cities slowly start growing in their size, and the population also start growing in the city urban areas. So urbanization also affects the distribution of the population. And जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता जाता है कि सिटी गाँवों की पॉपुलेशन कम होती जाती है और सिटीज बढ़ती जाती है. Now next, the third factor of the economical factor is the industrialization. Industrialization means the development or the establishment of the industries. बड़े बड़े कारखाने, factories, that is the industrialization. तो जहाँ पे industrial belts होती है या जहाँ पर industries established हो जाती है,
वहां पे क्या होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती है तो वहां पे लोगों को इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। तो जब लोगों की जरूरत होती है तो लोगों को वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। दैट्स व्हाई द पीपल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एरियाज वेयर बिग इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश, जहाँ पे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज या जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं उनके आसपास में लोगों का इकट्ठा होना रहना शुरू हो जाता है। और ऐसे एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं वह हाईली पॉपुलेटेड एरिया बनते जाते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रीज की जब इंडस्ट्रीज वहां पे से सेटअप होते हैं तो उसके लिए फैक्ट्री वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर फैक्ट्री लगेगी तो उसके अंदर कच्चा माल आएगा भी से और रेडी माल बाहर जाएगा भी से, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए लोडिंग अनलोडिंग वालों की जरूरत पड़ेगी। जब ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स बढ़ेंगी तो व्हीकल्स ड्राइवर्स की, व्हीकल्स मैकेनिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। जब लोग इकट्ठा होंगे तो शॉपकीपर्स होंगे, बैंक और जब जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पे जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए बैंक्स आना शुरू हो जाएंगी। सबके लिए डॉक्टर्स आ जाए, हॉस्पिटल्स ओपन हो जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। इस वजह से जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जिस एरिया में इंडस्ट्रीज लगती है वहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है एंड it affects the distribution of the population of the particular place. Now, there is the one example. Kobe, Osaka region of the Japan is thickly populated because of the percent of number of industries. Now, the third factor that is the social and cultural factor. Social and cultural factor. In the world, there are some places which are where there is no industries, no. I mean, like even maybe the climate is also not favorable, and the other factors are adverse. Even after in those areas, the people are highly populated. Some places attract more people because they have the religious and cultural significance. क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो जहाँ पर भी बड़े बड़े मंदिर है या जहाँ पर भी इंडिजिनियस सेंटर्स है, वहाँ पे भले वो माउंटेन्स के अंदर हो या डेजर्ट के अंदर हो, उसके आसपास लोगों का सेंट्रल वहाँ पे लोगों का अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। इन द उसी वजह से कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, जहाँ पे जस्ट लाइक द कम्युनल राइट्स होने लग जाते हैं, दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर ऐसी जगह से लोग धीरे धीरे दूर जाना शुरू कर देते हैं। इन एरियाज के अंदर अनरेस्ट होता है, मतलब हमेशा युद्ध होते रहते हैं या धर्म के नाम पे झगड़े होते रहते हैं, किसी और चीज के ऊपर झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसी जगह से लोग धीरे धीरे दूर जाना शुरू कर देता है। तो ये सब क्या है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स और एंड द रिलीजन फैक्टर्स आल्सो। एंड there are many times where the government offer the incentive to the people to live in the especially populated area। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो गवर्नमेंट जिस जगह पे कम लोग हैं या जिस एरिया में कम लोग हैं वहाँ पे लोगों को लाने के लिए, लोगों को रहने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनको कुछ प्रॉफिट्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। And can you some examples from your region? Of course, we can see that the places of the these religious importance, just like Badrinath, Kedarnath, or some other, just like Vaishno Devi. And these are the places where the geographical factors do not support, but do not attract, but because of the social and cultural or the religious regions, the people are start living there. And other region out of them is in the India, that is the Kashmir. In the Kashmir, because there's most of the time there's the unrest because of the terrorism, and that's why there are the attacks. That's why people
start moving from there to the another places of the country because they think that they are not safe here. So these were the factors which affect the distribution of the population of the particular place. So there were mainly we discussed about the three factors: geographical factors. In the geographical factors, there are four sub factors: availability of water, landforms, climate, and the soil. And then economic factors. In the economic factors, the minerals, if the minerals are available in the nature, the people will start moving towards them, and because the industry will set up an urbanization. And then the industrialization. And the last one was the social and cultural factors. Thank you.